Hello everyone, I welcome you to my channel Geo for Geography and myself Akshay. So guys, today I am here again with a video that is in the sequence of PYQ series. ठीक है, Prelims PYQ series particularly जो हमने स्टार्ट की थी. इससे पहले मैंने 2024 वाला Prelims पेपर भी डिस्कस किया, Geography section particularly, Environment भी, ठीक है. Then 23 and now it's time for 22 paper. ठीक है, so I'm going to discuss at least 4 to 5 years of paper so that आपको ना एक क्लियर आइडिया होगी कि पेपर सॉल्व करना किस वे से स्ट्रेटेजाइज्ड एक्सपेक्टेड है and accordingly we are supposed to like apply logic and everything as it. So chalo, without wasting further time, I think now I shall start the discussion of this particular paper. ठीक है, so now guys कॉमन रिपीटेटिव थीम्स है, कॉमन रिपीटेटिव एरियाज है. इससे पहले मैंने ज्योग्राफी पेपर का एनालिसिस भी किया है, एनवायरनमेंट भी किया है, देन पॉलिटी भी किया है. यू कैन हैव दैट पर्टिकुलर वीडियो ओवर इन दी प्ले लिस्ट, आप देख सकते हो इस चैनल पर. एंड देन यू कैन हैव अ बेटर आइडिया किस किस टॉपिक्स पे या कौन से रिपीटेटिव थीम्स है ओवर इन द एग्जामिनेशन. एंड इवन इन दिस डिस्कशन यू विल फाइंड रिपीटेटिव थीम्स. ठीक है, सो फर्स्ट लाइक एज इन क्वेश्चन यू विल फाइंड दैट कनेक्ट्स विद see world geography. It connects with the world geography and mapping as it. ठीक है, मैपिंग के पार्ट से कनेक्ट करेगा. करंट अफेयर्स आई वुड से इक्वली कनेक्ट्स वेल विद इट. नाउ द थिंग इज, देखो एनाटोलिया टर्की. ओके, सो ओवर हियर यू विल फाइंड कि यहाँ पे पेयर्स दिए एनाटोलिया टर्की. नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई अ रीजन and the correct match that is with the country. So Anatolia, yeah, that is in the Turkey. Amhara, right, you will find in the Ethiopia. See, Ethiopia में ये एक Ethiopia that is anyway you must be aware about due to civil strife, due to civil disturbances, या hunger and poverty and unemployment current affairs में होता है. So all these reasons were somehow due to that in the current affair. और इस पर क्वेश्चन है, तो that is this Amhara that is in the Ethiopia itself. ठीक है, अब ये थोड़ा सा करंट से कनेक्टेड है इसीलिए क्वेश्चन. Then Capo Delgado you will find that is given in the Spain. It is not in the Spain, rather it is in the Mozambique. ठीक है, ठीक. अब देखो ये क्वेश्चन जो कि करंट कंटेक्स्ट का है तो बहुत ज़्यादा आइडिया नॉलेज आपको नहीं होगा, बट अगेन इससे हमको स्ट्रेटेजाइज करना है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं. ठीक है, देन कैटालोनिया इटली. ओके, सो कैटालोनिया इटली you will find, yes, Spain. It is actually in Catalonia because there was a referendum that was held over in the Spain. So this is incorrect. Answer is only 2 pairs are correct. Answer is B. Okay, then next question. So I guess इस क्वेश्चन के आपको जो फ्रेमर की जो एक्सपेक्टेशन है वो क्लियर हो चुकी होगी. मैप एंड करंट अफेयर्स. देन द नेक्स्ट इज which one of the lakes of West Africa has become the dry and turned into a desert. See, I told you like in that discussion, ज्योग्राफी में जो जनरली क्वेश्चंस आएंगे 3 एरियाज के मैपिंग पर आएंगे. ठीक है, एक तो होगा वेस्ट अफ्रीका, वेस्ट एशिया, द अदर इज अफ्रीका एंड द थर्ड इज यूरोप. ठीक, कंपल्सरी यू विल फाइंड, अगर इस ऑप्शन में भी देखोगे तो अफ्रीका, यूरोप और वेस्ट एशिया यही दिखेंगे. ओवर हियर एज वेल वेस्ट अफ्रीका. ठीक है, तो क्वेश्चन जो जनरली आएंगे नीदर फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, नीदर फ्रॉम साउथ अमेरिका, नीदर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया और ओशियानिया जनरली. ठीक है, दो वी कैन नॉट मेक इट लाइक ए रूल, बट जनरली 3 कॉन्टिनेंट से ये आएंगे, वेस्ट अफ्रीकन रीजन या दैट एशियन रीजन, देन अफ्रीकन रीजन एंड यूरोपियन रीजन. ओके, सो now this is in the current affairs again, the Lake Fagubin. You will find Lake Fagubin is rather the correct answer, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्योंकि current affairs में that is now getting dried, okay, and that is in the current of getting into desert, and जिस वजह से Boko Haram and other terrorist groups are getting some benefits out of it. So इसीलिए it was in the news. Next, it's about, I told you कि compulsory river पे क्वेश्चन होगा या water body पे क्वेश्चन होगा या वाटरफॉल है, कैनान्स है ना. सो यू विल फाइंड क्वेश्चन ऑन दिस फॉर श्योर. एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस यू विल फाइंड इन द एग्जामिनेशन, और जो 100% इस ईयर्स के पेपर में भी रिफ्लेक्ट होंगे. ठीक है, तो एवरी ईयर यू विल फाइंड रिवर पे क्वेश्चन आएगा, दैट इज फॉर श्योर. देन व्हाट, नाउ देखो गंडीकोटा कैनॉन दैट इज नोन एज द ग्रैंड कैनॉन ऑफ इंडिया. ठीक है, दैट इज नोन एज ग्रैंड कैनॉन ऑफ इंडिया. ये तो कंपेरेटिवली फैक्ट ही है. यू विल फाइंड ओवर हियर it asks you for simply on which river it is located. ठीक है, so Kaveri, Manjra, Pennar और Tungabhadra, all they are in South India. Answer is C. Fact है.
ठीक है, दैट इज ए फैक्टफुल क्वेश्चन। तो आंसर तो पता होना चाहिए तभी ये हो पाएगा, तो आंसर इज C2 दिस क्वेश्चन। ठीक है, सी आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपके आंसर आए, बट द थिंग इज कि यहाँ से हमको स्ट्रेटेजी क्या लेनी है, दैट इज रादर ऑफ मच मोर इम्पोर्टेंट। देन अगेन कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, दिस इज व्हाट ऑन इंडियन ज्योग्राफी, माउंटेन्स, हिल्स, यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड ऑन। देन पीक्स और माउंटेन्स, ठीक है, सिंपली माउंटेन पीक्स और रीजन, किस माउंटेन रीजन का पार्ट है, दैट इज व्हाट आइडेंटिफाई फॉर। नाम क्या पर हुआ, दैट इज इन अरुणाचल, तो गढ़वाल हिमालय तो उत्तराखंड में, दैट इज फेयर इज करेक्ट। नंदा देवी कुमाऊं हिमालयस, ठीक है, नंदा देवी कुमाऊं हिमालयस, यस आंसर यू विल फाइंड नंदा देवी, दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व, और ये इन द उत्तराखंड है, कुमाऊं हिमालयस, तो ये भी करेक्ट है। एंड नॉकडेक, दैट इज इन द मेघालय, ठीक है, एंड दैट इज गिवन एज सिक्किम हिमालय, आंसर इज नो, तो इसका आंसर होगा B2 ओनली। ठीक है, सो सिंपली देखो अब यहां से क्या है, ये क्वेश्चन एज इट इज रिपीट नहीं होगा, बट व्हाट इज योर ड्यूटी, यू शैल एक्सप्लोर दिस ऑप्शंस, है ना, एक्सप्लोर दिस ऑप्शंस। नाउ व्हाट आई विल बी मेकिंग वीडियोस एज वेल ऑन लाइक एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट करूंगा मैं, ऑप्शंस टुडे क्वेश्चंस टुमारो, ठीक है, सो उसमें ना मैं हर ऑप्शन को डिस्कस करूंगा, बट ओवर हियर टिल देन व्हाट यू हैव टू सपोज एंड गो थ्रू दिस ऑप्शंस ऑन योर ओन एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म लेवांट, अगेन सी दैट इज ऑन वर्ल्ड ज्योग्राफी, that is on West Asia. I told you ना कि कंपल्सरी क्वेश्चन आएगा, और मैपिंग, अगर वर्ल्ड मैपिंग पे क्वेश्चन देख रहे हो, दैट इज थर्ड क्वेश्चन इन द सीक्वेंस ओवर इन द सेम पेपर। रिवर पे एक आ चुका है इंडियन, एक माउंटेन पे आया है, और 3 यू विल फाइंड ऑन द वर्ल्ड मैपिंग इटसेल्फ, सो यू कैन अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, सो द टर्म इवेंट रिसेंटली सीन इन द न्यूज करस्पॉन्ड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। ठीक है, सिंपली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, पता हो तभी आंसर होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर एक Levant local winds भी होती है, don't get confused with it, that is what rather a region that it is asking you for. So Levant, that is eastern part of the Mediterranean Sea or the Western Asia, ठीक है, Western Asia, West Asia, that is simply it is asking you for. So you'll find the region along the eastern Mediterranean shores, yeah, eastern Mediterranean shores is rather known as Levant. ठीक है, तो you must be aware about this particular term, current affairs में आता ही है, so you have that idea. Then now question is again on world geography, mapping, okay, mapping current affairs, and that is on Asia. Fourth question है on the mapping in the same year. Are you getting the significance of mapping, guys? Mapping बहुत ज़्यादा important है, हाँ, but इसका root है current affairs में, because अफगानिस्तान it is in the current affairs, तालिबान ruled हुआ था, US withdrawal हुआ है in that particular case 21 में, and that is due to it was in the news. Now corresponding question then. So Azerbaijan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, and Turkmenistan. Here now you have to have a clear mapping and location of the Afghanistan and its neighboring states as well. So देखो यहाँ पे the neighboring state of Afghanistan, Pakistan, India shares however 50 kilometer of border, very narrow stretch, 100 kilometer of border, so very narrow stretch as in Pakistan, then Iran, then Turkmenistan, then ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ठीक है, देयर इज नो अजरबैजान ओवर हियर, ठीक है, अजरबैजान यहाँ पे नहीं है, एंड नो किर्गिस्तान दैट इट सीम्स। ठीक है, सो किर्गिस्तान भी यहाँ पे नहीं है, एंड सिंपली नाउ यू हैव टू फाइंड सम ट्रिक, कैसे हम इस कंट्रीज की इन एंड अराउंड करंट अफेयर में जो भी कंट्री होगी, यूक्रेन, देखो यूक्रेन पे 23 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, देन यू विल फाइंड अफगानिस्तान पे अभी भी क्वेश्चन है, देन इक्वली यू विल फाइंड सी जो कंट्री करंट अफेयर्स में होगी, थाईलैंड जैसे, फिलीपींस के प्रेसिडेंट को भी आईसीसी ने यू विल फाइंड के समन इशू किया है। ठीक है, तो फिलीपींस है, या साउथ चाइना सी में जापान है, या चाइना है, सो अलॉन्ग दिस काइंड ऑफ कंट्री, बांग्लादेश इन द करंट अफेयर्स है, यू हैव टू फाइंड आउट सम ट्रिक टू रिमेंबर दिस नेम्स। ठीक है, सो इसका आंसर है 3, 4 एंड 5, आंसर इज C2 दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट इज with reference to India, consider the following statement. It is on Indian geography resources. ठीक है, resources पे ये question है, on location वो कह लो, ये map कह लो, या basic information on. Now, it's about monazite. So monazite is a source of rare earths. Yeah, it is a source of rare earths mineral. Though these rare earths are not rare in a sense, but ये इसको पहले attack किया, इसलिए rare earth is rather continued. Monazite contains thorium. Yeah, it contains thoriums. Okay, so thorium वाला part है. India is the top 5 thorium rich country, so that we should take proud of. Okay, और हमारा 3-stage nuclear program है that equally talks about the same. Monazite occurs naturally in the entire Indian coastal sand. See, entire, extreme words over here.
now you have to negate it. The reason being क्योंकि entire मतलब ranging from Gujarat to you will find West Bengal है ना, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, Odisha, Andhra and West Bengal. See, this coast does not have as in the entire coast as a thorium. It is rather in India you will find केरला में कोस्टल रीजन है, कुछ पार्ट ऑफ कर्नाटका हो सकता है, देन यू विल फाइंड बिहार में कुछ हद तक थोरियम है एंड छोटा नागपुर प्लेटू रीजन. सो नॉट एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया हैज दिस थोरियम रिजर्व. एंड द फोर्थ, इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज कैन ओनली प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनो, अगेन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ठीक है. बट द थिंग इज यहाँ पर क्योंकि इट इज एन एटॉमिक मिनरल, क्योंकि इट इज एन स्ट्रेटेजिक मिनरल, रेयर अर्थ मिनरल, नाउ ओनली गवर्नमेंट इंडस्ट्री और अथोराइज एजेंसी और गवर्नमेंट ओनली एजेंसी कैन प्रोसेस इट. सो आंसर 4 इज करेक्ट. ठीक है, लॉजिक है यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि यार एटॉमिक मिनरल है, स्ट्रेटेजिक मिनरल है, तो गवर्नमेंट अभी खुद के कंट्रोल में रखेगा, नॉट इट इज नॉट सपोज टू एलोकेट इट टू द प्राइवेट प्लेयर. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 1, 2 एंड 4. आंसर इज बी. आई होप लॉजिक समझ आ रहा है आपको कैसे अप्लाई करना है. नेक्स्ट, in the northern hemisphere the longest day of the year normally occurs in, this is the third question in the sequence. ठीक है, on you will find 21st of June. ठीक है, 2016-17 में इंटरनेशनल योगा डे हैज बीन डिक्लेयर्ड. योगा डे हैज बीन डिक्लेयर्ड ऑन 21st of June by United Nations General Assembly, and since then we were expecting question on this, and you will find this is the third instance जहां पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है. ठीक है, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन. you guys are pretty much aware about the solstices and equinoxes, and in the northern hemisphere longest day is on 21st of June. On the contrary, southern hemisphere longest day is on 22nd of December. ठीक है, तो ये पूछ क्या है, in the northern hemisphere longest days occurred on which half of the month of that particular, first of the month of June, second half of the month of June, first of the month of July and second half of the month of July. ठीक है, तो आंसर is pretty much easy, first half of the month of June. आंसर is A. ठीक है, अब इसको आप थोड़े से कंसेप्ट रिवाइज कर लेना, यू कैन कनेक्ट इट. नाउ सम हाउ ट्रिकी क्वेश्चन है, इंडियन ज्योग्राफी. ठीक है, you can connect it to the trade. ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी से कनेक्ट कर सकते हो, ट्रेडिंग वाला एस्पेक्ट है. देन हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट. जनरली दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ना, इसको रिवर्स स्टार्ट करना होता है गाइस. ठीक है, क्योंकि पहले ऑप्शंस पढ़ लोगे फिर ये कर लो, क्वेश्चन पढ़ोगे तो यू वोंट एबल टू कनेक्ट इट. सो पहले क्वेश्चन पढ़ लो राइट एट द एंड एंड देन गो थ्रू ऑन द ऑप्शन. सो आंध्रा, केरला, हिमाचल एंड त्रिपुरा. ठीक है, somehow I would categorize medium to difficulty level. ठीक है, medium to high difficulty level. The reason being क्योंकि ये जो expectation है, इतना ऐसे क्वेश्चन पूछना seems very much difficult, but still UPSC has asked this kind of question क्योंकि which states are rather producing this tea. Okay, Assam anyway you are much aware about. Kerala equally you can connect with. ठीक है, बाकी the rest I feel के much difficult to connect with. ठीक है, so still answer basically आंध्र प्रदेश इज नॉट दैट प्रोड्यूसिंग स्टेट. ठीक है, एक एक्सेप्शन है, ईस्टर्न इंडिया में उतनी कंडीशंस नहीं है, ईस्टर्न घाट में. सो हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा एंड केरला रादर प्रोड्यूसिंग स्टेट. सो ओनली 3 स्टेट्स आर प्रोड्यूसिंग ऑफ दी ट्री. ठीक है, अब ये थोड़ा सा फैक्ट है, सो यू हैव टू कनेक्ट इट अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, नॉट नेसेसरी सभी क्वेश्चंस आएंगे हमको, वी कैन एब्सोल्युटली कनेक्ट बाय मींस ऑफ सम लॉजिक एंड स्किप इवन फ्यू ऑफ देम. देन इंडियन ज्योग्राफी रिवर्स. ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी रिवर्स, एज आई टोल्ड यू वाटर बॉडीज को क्वेश्चन आएगा तो 100% क्वेश्चन है. सी रिजर्वायर एंड स्टेट. ठीक है, यू कैन एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी रिवर एंड डैम, रिवर एंड लेक्स, रिवर एंड रामसर साइट्स, रिवर एंड एनी अदर केसेस एज जो रिवर्स एंड जियोपॉलिटिकल अग्रीमेंट्स या डिफरेंट कंट्रीज के साथ अग्रीमेंट है, स्टेट के अग्रीमेंट्स यू कैन एब्सोल्युटली कनेक्ट. नाउ घाटप्रभा दैट इज ऑन द कृष्णा, इट इज नॉट इन द तेलंगाना, इट इज रादर इन कर्नाटका. ठीक है, तो घाट प्रभा देखो, अब ये भी लोकेशन बहुत इजी सा क्वेश्चन है. आई वुड कैटेगराइज रादर इजी क्वेश्चन, क्योंकि डैम के लोकेशन तो पता होने ही चाहिए ना गाइस, अदरवाइज हाउ कम वी एबल टू सॉल्व. देन गांधी सागर मध्य प्रदेश ऑन चंबल रिवर, तो आंसर सेकेंड यस करेक्ट. इंदिरा सागर इट इज इन आंध्र प्रदेश, नो इट इज ऑन नर्मदा. ठीक है, अब नर्मदा पे अगर है it is in Madhya Pradesh, it is not in Andhra Pradesh. So third prayer is incorrect. And Methuen Dam, Chhattisgarh, you must be remembering the Damodar Valley Development Project that was commenced in second 5-year plan. तभी ये डैम एक्चुअली कंसेप्चुअलाइज और इसको डेवलप भी किया था, Methuen Dam. So it is in the you will find Chhattisgarh. So answer basically 2 pairs correct. ठीक है, so that is I think correct. Then with reference to the T boards in India, consider the following statements. Now T board पर है, थोड़ा statutory bodies है. ठीक है, Indian Geography statutory bodies. ठीक है, T पे 2 क्वेश्चन है, you can if you can find it. T related 2 क्वेश्चन है, producing state और T board पे.
टी बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी या दैट इज एस्टैब्लिश्ड बाय मींस ऑफ एक्ट, ठीक है। अब ये टी बोर्ड है, कॉफी बोर्ड है ना, दीज आर व्हाट यू विल फाइंड। एंड नाउ द रिसेंटली करंट अफेयर्स में टर्मरिक बोर्ड भी है, ठीक है। सो गाइस यू हैव टू दो दैट इज नॉट a statutory as in, but you have to find out the information about this turmeric board, ठीक है। then it is a regulatory body attached to the Ministry of Agriculture, Farmer Welfare, no, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक है यहाँ पे कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ये ओवरलुक नहीं करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स करेगा, क्योंकि टी इज यू विल फाइंड प्लांटेशन क्रॉप, ठीक है। तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री डील तो कर सकता है नो डाउट, बट जनरली नहीं करेगा, ठीक है। देन यू विल फाइंड टी बोर्ड होस्ट ऑफिस इन बेंगलुरु, इट इज नॉट इन बेंगलुरु, इट इज रादर इन कोलकाता, ठीक है। सो कोलकाता में ये ऑफिस होगा। सो आंसर सेकेंड एंड थर्ड आर इनकरेक्ट। द बोर्ड हैज ओवरसीज ऑफिस एट दुबई एंड Moscow, yes, because it deals with the exports, so obviously it needs this case, ठीक है। थोड़ा सा difficulty level I would say, अगर factual question है ना। So in such a case what we have to, you can have option attempt it either or skip it either, ठीक है। So answer is 1 and 4, answer is D this question. Then consider the following statement. First, high clouds primarily reflect solar radiation and cools the surface, ठीक है। हाई क्लाउड रिफ्लेक्ट दी solar radiations and cool the surface. Now you have to have this idea, there are three types of cloud: high cloud, medium cloud and middle cloud या low cloud, ठीक है। अब इसमें से high cloud जो होंगे thin होंगे, they are transparent, and low clouds are dense as in, and they are responsible for precipitation, moisture holding capacity and all these aspects. Now the case is, अगर high cloud अगर thin होंगे, see over in this diagram, thin, if they are thin, so they are not having that enough potential कि ये reflect कर सकते हैं, ठीक है। So high clouds are not primarily reflect, they are rather allowing the penetration of the solar radiations and cool the surface. No. And low clouds have a high absorption of infrared radiation emanating from the Earth's surface and thus causing warming effect. Again, see this low clouds are better reflector, है ना। 27 units of energy is reflected by the low clouds only on the surface, and you will find they are the best reflector because their density is very high, and thus infrared clouds rather, or radiations are rather absorbed by the high clouds. So statement switch कर दिए यहाँ पे, and thus you will find both are incorrect, neither one neither two. इट इज रैदर आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक है यहाँ पे अप्लाई करना, कौन से क्लाउड थीन होंगे, राइट, हाई क्लाउड होंगे या लो क्लाउड होंगे, थीन, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन कनेक्ट विद दिस। नाउ द लास्ट क्वेश्चंस ऑन दिस हेड, सी टेक्निक्स, ठीक है। ये है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के टर्म में, यू विल कैन कनेक्ट विद द एनी लाइक इन, और राइस पे तो क्वेश्चन आता ही है। सो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन और कल्टीवेशन इन विच अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड इज प्रैक्टिस रिजल्ट्स इन, ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेजेस? See, it is first practiced in Madagascar, ठीक है। Madagascar over, that is the African country, ठीक है, island country, one of the largest island over in the Indian Ocean, and there you will find this was practiced. तो अब यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स है इसके? रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसका बेनिफिट ही इसलिए हुआ था कि ये वाटर कंजम्पशन लेस करे, सीड रिक्वायरमेंट्स लेस करे, ऑर्गेनिक मैन्योर यूज कर सके, क्रॉपिंग डेंसिटी कम हो, जिससे क्या होगा, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन होगा। reduced methane production, yeah, it equally reduced methane production. Why? Because seed अगर use और degradation कम होगा राइस फील्ड का या क्रॉप रेसिड्यू का, you will find कि ये benefits होंगे। and then reduce electricity consumption because irrigation की requirements कम है, you will find water requirements कम होगी, ground water exploration कम होगा, irrigation requirements भी कम होगा, ठीक है। so electricity consumption is less, answer is all, so answer lies is D. Okay, so I hope guys you are getting this thing. See, I'm trying my best कि आपको लॉजिक कैसे अटैच करना है, that is what I am helping for, and this is what my genuine attempt to help you to attempt the preliminary past years questions and examination. So this is what all about for this video. I thank you for watching you till this end. If you really like it, share and subscribe to our channel. Thank you guys.